Hello everyone, welcome back to another live stream video. First of all, a very happy Independence Day to all of you. Like कल ही हमारा इंडिपेंडेंस डे था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया होगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्ट्रीम. ओके, सो नाउ यह स्ट्रीम हमारे कल के लाइव स्ट्रीम का एक कंटिन्यू स्ट्रीम होगा. लाइक इफ यू नो, लाइक कल के लाइव स्ट्रीम हमने एक फ्रंट एंड मेंटर से एक चैलेंज को पिक किया था. ओके, सो आज का इस वीडियो में हम उसी चैलेंज को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे. ओके, सो आई होप यू नो कि हमने लाइक यू ऑलरेडी नो अबाउट लाइक व्हाट इज द फ्रंट एंड मेंटर एंड लाइक हम इस वेबसाइट पर कर क्या रहे हैं. लाइक यदि आप मेरे कल का लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन किए थे तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये एक लाइक यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं या आप नए फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म हो सकती है जहां पर आप रियल लाइफ चैलेंजेस लाइक कोडिंग चैलेंजेस को सॉल्व करके अपने स्किल्स को और इन्हांस कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिल जाएंगे और आपको लर्निंग पाथ भी मिलेगी और आर्टिकल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, आप और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो उनके साथ आप कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. Okay, so like, I found this platform is best यदि आपको यदि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपने स्किल्स को और एनहेंस करना चाहते हैं. ओके, सो बिफोर मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में और बताऊँ, जस्ट कमेंट डाउन लाइक लाइक योर रोल या क्या आप वेब डेवलपर ऑलरेडी एक वेब डेवलपर हैं या आप सीख रहे हैं और यदि आप ऑलरेडी वेब डेवलपर हैं तो आपको कितना एक्सपीरियंस है. ओके, so like so that we can make this stream more interactive. Okay, so हम like एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए okay, challenges को सॉल्व करने का प्रयास करें. Okay, so just comment and also you can comment anything in the like chat section. Okay, like it's open for all. Okay, so just make this stream more interactive, guys. Okay. You can comment anything. So now let's see, like if you know like let's say कि हमने like कौन से challenges को pick किया है. Okay. So सबसे पहले आप फ्रंट एंड मेंटर के ऑफिशियल साइट पे आएंगे. आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल साइट का लिंक है frontendmentor.io. ओके, so यहाँ से यदि मैं माई चैलेंजेस इस टैब पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे जो मेरा करंट एक्टिव चैलेंजेस है वो दिखाते हैं, आप शो करेगा. लाइक यू कैन से मेरा ये 2 एक्टिव चैलेंजेस हैं और मैंने लगभग मैं 13 चैलेंजेस को कंप्लीट कर लिया. इफ यू सी हियर, लेकिन सभी चैलेंजेस को मैंने कंप्लीट कर लिया और इनमें से बहुत से चैलेंजेस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर किया हुआ है और उसको यूट्यूब पर भी अपलोड किया है, तो आप उसको एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं. ओके, बट इफ यू वांट मी टू लाइक अगेन create these challenges or solve these challenges at live stream. Okay, जैसे मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा, so you can also comment me this thing. Okay, I will try to like complete this challenge. Okay, so now let's say like यदि मैं इन प्रोग्रेस चैलेंज पाता हूँ यहाँ पर like you can see mortgage repayment calculator. like मैं लास्ट लाइव स्ट्रीम में इस चैलेंज को पिक किया था. ओके, और लाइक फ्रंट एंड मेंटर में है कि जैसे आप किसी चैलेंज को पिक करते हैं तो आपको कुछ स्टार्टेड फाइल देता है जहाँ पर आपको इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है. लाइक एक redmi.md फाइल दिया होता है जहाँ पर आपको सारा डिस्क्राइब किया गया होता है कि कैसे आप इस चैलेंजेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी, मैंने ऑलरेडी स्टार्टर कोड को डाउनलोड कर लिया है. ओके, सो आई विल नेविगेट हियर. So I will open my file explorer. Okay, and navigate to the path. Okay, जहाँ पर मैंने like starter कोड को स्टोर किया है.
ओके, सो इफ आई गो टू फ्रंट एंड मेंटर प्रोजेक्ट, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सभी स्टार्टर कोड है, सभी फ्रंट एंड मेंटर चैलेंजेस के स्टार्टर कोड है। एंड हियर यू कैन सी मॉर्टगेज रीपेमेंट कैलकुलेटर, सो आई विल ओपन इट। ओके, और इस फोल्डर पर हम राइट क्लिक करते हैं। ओके, शो मोर ऑप्शन और ओपन विद कोड, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारा यह फोल्डर VS कोड एडिटर में ओपन होता है। So just wait until it get open. Meanwhile, you can also comment like whether I'm properly audible to you guys or not. कि आपको मेरी आवाज़ और यह वीडियो सही से मतलब लाइक आपको मेरी आवाज़ सही से सुन पा रहे हैं और वीडियो यदि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं, यू कैन chat down. Okay. So if so that I can like यदि कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, वीडियो को ऑडियो इंक्रीज करना है या वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो आई कैन डू इट। Now as you can see, like तो प्रोजेक्ट है ओपन हो चुका है VS कोड एडिटर में। ओके, मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ फोल्डर लाइक स्ट्रक्चर। लाइक हियर यू कैन सी द redmi.md फाइल। ओके, लाइक इस फाइल में आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, कैसे आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसे प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, लाइक राइट क्लिक एंड देन ओपन प्रीव्यू। हियर यू कैन सी चैलेंज, लाइक दिस इज द वेलकम टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं द चैलेंज, लाइक क्या चैलेंज है। So here I will just quickly brief you what is the challenge. Like the challenge is to create a mortgage repayment calculator. Okay, यदि आप जानते हैं mortgage, यदि आपने EMI लिया है या लोन लिया है तो उसका लोन का रीपेमेंट होता है। ओके, सो उसका रीपेमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, बेसिकली इस चैलेंज में उसी को देखेंगे कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और आपको मंथली EMI कितना होगा हम उससे कैलकुलेट करेंगे, या आप इंटरेस्ट ओनली अपना EMI का इंटरेस्ट ओनली देना चाहते हैं तो वो भी हम देखेंगे कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो नाउ इस चैलेंजेस में हमें लाइक यहाँ पर आप देखते हैं राइट साइड में यदि फोल्डर सेक्शन देखेंगे तो डिजाइन एक फोल्डर है जहाँ पर आपको सभी लाइक डिजाइन दिए गए होते हैं। लाइक इस डिजाइन में इफ यू ओपन एनी डिजाइन, लाइक इस इमेजेस होते हैं, तो जस्ट बेसिकली यू कैन कंसिडर इट एज डिजाइन की मैं अपने वेबसाइट को लाइक इस डिजाइन फोल्डर में दिए हुए इमेजेस के अनुसार क्रिएट करना है। लाइक अपने यूजर इंटरफेस को इस तरह क्रिएट करना है, लाइक जैसे एक्टिव स्टेट्स, यदि हमारे कोई फील्ड पर एक्टिव स्टेट है, यदि हम उसको ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका लाइक बॉर्डर कलर किस तरह होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। ओके, जस्ट UI डिजाइन यू कैन सी, यहाँ पर आपको अलग अलग UI डिजाइन, अलग अलग स्टेट के लिए UI डिजाइन दिए होते हैं, और इसको रेफर करके आप अपने वेबसाइट आप प्रोजेक्ट के UI को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यू कैन से फॉर एरर स्टेट। ओके, यदि हमारे किसी फील्ड में एरर को शो करना है तो हम किस तरह शो कर सकते हैं, ओवर के केस में हम किस तरह डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, और यदि हमें मोबाइल के लाइक मोबाइल डिवाइस के लिए यदि अपने लेआउट को क्रिएट करना है तो हम उससे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर द डिजाइन। सो बेसिकली हमें अपने प्रोजेक्ट के जो क्रिएट करेंगे वो जो UI को इस लाइक इमेजेस में दिए हुए UI के एज क्लोज क्रिएट करना है। ओके, और आल्सो हमें वैलिडेशन भी लाइक फॉर्म वैलिडेशन को भी इम्प्लीमेंट करना है। यदि कोई फील्ड एम्प्टी है तो उसको वैलिडेशन प्रूव करना है कि यदि कोई फील्ड एम्प्टी है तो हम रीपेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हम प्रॉपर एरर बेसिस को भी शो करेंगे। ओके, complete the form only their keys in using their keyword. Okay, so these are the like the you can say the points which we can implement in our project. Okay, and now this is the where to find everything आपको like जो information है वो कहाँ मिल सकता है। like your task is to build out a project to design inside the design folder, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। okay, so like font size padding सबका भी मतलब ध्यान रखना है। So basically you can read out this project. Okay, so like the challenge का जो main part है वो आपको यहीं पे लिखता है। okay, the challenge section के अंदर बाकी नीचे जो आप देखते हैं ये आप ऐसे प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं और कैसे इस like इसे डिप्लॉय कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके,
so you can read it. Okay, but as of now we can ignore this part. Okay, and now यहाँ पर आपको git ignore फाइल है. Okay, so we can ignore this part. Like git ignore ये वो फाइल होते हैं. यदि आप गिटहब पर इस कोड को पुश करते हैं तो आप कौन कौन सी फाइल को चाहते हैं कि वो गिटहब पर पुश ना हो, तो उस फाइल के नेम को हम यहाँ मेंशन करते हैं और वो फाइल गिटहब पर बेसिकली कमिट नहीं होता है. ओके, index.html एक मेन फाइल होता है, as you know. Okay, and basically readme.md, sorry, readme slash template.md फाइल लाइक ये as एक टेम्पलेट दिया और readme का यदि आप फ्रंट एंड मेथड के चैलेंज को सॉल्व कर लें, अब आप उसे सबमिट करना है. तो सबमिट करने के लिए आप अपने रेडमी को कुछ लाइक इस टेम्पलेट में दिए हुए डिजाइन के अनुसार उसे डिजाइन करते हैं और देन उसे सबमिट करते हैं. ओके, so that is all about this overview. Okay, लाइक मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट प्रोजेक्ट मॉर्गेज रीपेमेंट के प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट को सेटअप किया हुआ है with the help of React. So I will open that project. So for that again I will go to folder like my file manager, click on desktop. Okay, then here YT projects, so click करते हैं, then mortgage repayment calculator इस like इस folder पर right click करते हैं. Okay, then show more option and open with code. Okay, so just wait until it get open. Meanwhile also I have another request to you guys. यदि आपको मेरा यह लाइव स्ट्रीम पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक जरूर करेगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करेगा. ओके, my target is to reach 500 subscribers as soon as possible. So if you subscribe me, it will motivate me a lot. Okay, so don't forget to subscribe if you're new. Now let's see like कि हमने लास्ट लाइव स्ट्रीम वीडियो को कहाँ तक अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. Okay, so before show you the code, I want you to like run this project. So like मैंने इस प्रोजेक्ट को विद फ्रंट एंड टूल की मदद से क्रिएट किया है. ओके, सो इसे रन करने के लिए सबसे पहले हमें टर्मिनल को ओपन करना होगा. मैं इस फाइल मेनू को क्लिक करता हूँ, टाइप थ्री डॉट पर. ओके, देन टर्मिनल से मेनू पर जाते हैं और यहाँ से न्यू टर्मिनल को ओपन करते हैं. सो like it will open a new terminal. Just wait, just decrease the like font size. Okay, or first of all I want you to comment the command. like कैसे हम like एक रिएक्ट प्रोजेक्ट को कौन से कमांड की मदद से हम इसे रन कर सकते हैं. I just want to know like how many of you know like this command कि कैसे हम किसी रिएक्ट प्रोजेक्ट को रन करते हैं. So just comment it down the code guys. Let's see. Okay, and also if you don't know like how to run a React application, you can also comment like no. Okay, यदि आप जानते हैं तो उस कमांड को टाइप करें. Okay, let's see. Just make it guys like the stream is more interactive. Okay, यदि आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है या आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं. Okay, so just I just want you to make the system interactive. Okay, so like I don't want to be a only person who only speak. I just want you to you can also speak. So I think like we can proceed. Okay, so now I will show you the command like this. So कि हम अपने React application को रन कर सकते हैं. So since I have created my project with the help of Bitfront framework, so हम अपने React application को रन करने के लिए कमांड यूज करेंगे npm run dev. Okay, and just press enter button. Okay, so now you can see like wait is ready. Okay, and now here you can see the local unlocal on your local system on which port is your application is running. Okay, you can see the URL is also there. Okay, http:// localhost 5173.
So to open this project in your default web browser, okay, you just need to press the control button, and then at the same time you just need to click on this URL. Okay, so just hold the control button and then click on this. Okay, so it will open your application in your default web browser. And see, as in my case, like the Chrome is my default web browser, and our application is also open in that web browser. Okay, so like लास्ट टाइप से वीडियो में हमने mortgage form को already create कर लिया था. Okay, so like as you can see, okay, like I have created the input field for taking the amount and also taking the term, interest rate, and also the type of the mortgage, like whether it's repayment or interest only. And also at the bottom you can see the calculate repayments button. Okay, like this button पर क्लिक करके हम अपने repayments को calculate करेंगे. Okay, now I will show you the code, like how I have created this UI. तो फादर सबसे पहले अपने React, like अपने React application को initialize and then Tailwind CSS को setup किया है. Okay, so if you don't know how to set up Tailwind with React, you can comment. I will give you an overview. Okay, but if for now, I assume that you already know, so I will skip that part. Okay, then inside that src folder, okay, and after the like link our project with Tailwind, okay, हमने इसमें font family को भी चेंज किया था, रेड font family को यूज किया. देन असिस्ट फाइल को हमें मॉडिफिकेशन करते हुए क्या हमें कुछ इमेजेस को शो कर लेते हैं. इसके लिए हमें जो फ्रंट एंड मेंटर पर ऑलरेडी हमें असिस्ट में कुछ इमेजेस दिए हुए, so we just need to copy this images folder and just paste it here. Okay, that's it. And then let's see the app.js file. Okay, like this, if you know, like this is the like the main.js is first your like root file of your Link application, and then inside that you can see it's only rendering this app component. Okay, so if you go inside the app.js, here you can see. Okay, now let's see the how I created a UI. Okay, then I will show you the different, but like first I have created one container div. Okay, और उसका मैंने कुछ like CSS property को implement like use किया है. Then inside it I have used another div. So I just give you like this is the main container div, which you can see like this div is creating that part. Okay, अब उसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक another div create किया है. तो basically if you can see like this div, जो कि आपको सेंटर में दिख रहा है और इसका बैकग्राउंड वाइट है, इस div को मैंने लाइन नंबर 75 पर क्रिएट किया है. You can see the basic color white I have given, and I have used the grid call once, and for large devices there will be grid which have the call to. Okay, and then inside the step I have used two components. The first component is mortgage form. Okay, like app is the form which you can see here. इसका सारा कोड सारा लॉजिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इस कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ. Okay, and the second component is responsible for result, showing the result. Okay, which I will develop in this live video. And now let's see the mortgage form component. So if you like control click on this, okay, okay, let's uh, reduce the font size. Okay, now I control click, like you can see it will open that component in a new tab. Okay, and here you can see the like of the UI part, how I created. Okay, like I have used one container div, then inside one div which will show the heading. Okay, like h1 tag, a clearer button. Okay, then if you go here, I have created one form for taking the like mortgage amount, term, and the date. Okay, so I won't bore you guys like to explore this.
like I just an overview, like like this format, like mortgage calculator format when is input field type to taking the mortgage amount and then mortgage term, and like to I have also created this repayment button. Okay, so now here also I have implemented some validation. Okay, if like if any user, okay, like click on this calculate repayment without filling a single इनपुट फील्ड, ओके, यदि हमने कोई इनपुट फील्ड को फिल नहीं किया है, ओके, एंड देन इफ आई वांट टू कैलकुलेट अ रिपेमेंट, ऑब्वियसली यदि हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंस हमें मॉर्गेज अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सभी इंफॉर्मेशन को हमारे पास होना जरूरी है, राइट, हमें अमाउंट पता होना चाहिए, टर्म पता होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी पता होना चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इफ यूजर ने किसी फील्ड को एम्प्टी छोड़ दिया, इसलिए हमें उस पर वैलिडेशन को लगाना होता है, ओके। So I also wanted to know like how we can improve validation into our React form or any JavaScript form. Okay, you should know about it. Now let's see. यदि मैं किसी फील्ड को फिल नहीं करता, like सभी को इनपुट कभी कभी छोड़ता हूँ और कैलकुलेट प्रीपेमेंट्स को क्लिक करता हूँ. Let's see what happens. Now you can see I got some information like this field is required, and also the color has been also changed, like the border color also changed and the background color also changed. Like this field is required here. I can for mortgage term also an interest rate also I am getting this, like this field is required, and for mortgage type also I am getting the warning message as this field is required. Okay, now if I enter any amount here, 2.5 lakh dollar, okay, and if I enter the term as 25, interest rate as like 5.5, okay, and if I choose the, now let's say I don't choose the mortgage type, and if I again click on the calculate repayment, let's see what, like you can see again I am getting this, the field is required. Okay, that means I need to select at least one repayment type. So let's select the repayments. Okay, so I have selected. Now let's click on the calculate repayments. I click on it, but nothing happened. You can see not got anything here. That's the part which we are going to create in this live stream video. जैसे हमने लाइव स्ट्रीम वीडियो को लाइक सभी फॉर्म में सभी डाटा फिल हो चुके हैं, और जैसे हम कैलकुलेट रिपेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें उस रिजल्ट को इस फॉर्म के राइट साइड में शो करना है इन द मॉर्गेज रिजल्ट सेक्शन. ओके, सो इसे हम क्या करते हैं, बट फॉर एज ऑफ नाउ आई हैव like I have already written the logic for calculate mortgage like repayments. If you see here, like I have created the calculate mortgage repayments function here. Okay, like currently I am storing the amount, term, rate, and type in the mortgage data state. Okay, so I have already created that state. So like if this field is changing, so I have implemented a on change event on every input field. Okay, so if this amount is changing, okay, then the value will be stored in this amount state. Okay, like mortgage dot amount. If term is changing, then it will store the value in term, like mortgage dot term. Similarly, if rate is changing, then it will store the rate in here, and if type is changing, then it will store the type. Okay, so first what I'm doing, I'm like destructuring the amount, term, rate, and type from the mortgage data or mortgage data. I'm sorry if I mispronouncing the term. Okay, if you know, you can comment down like what is the correct pronunciation of this. Okay, but I usually pronounce is mortgage data. Okay, I hope it's correct. Gonna सबसे पहले what I am doing, I am converting the rate, okay, into monthly rate. Okay, like this is the rate, is annual rate is given here. So first of all, I need to convert into a monthly rate. For that, what I am doing is I am doing this rate divided by 100 into a specific. We need to do the rate. First, I need to convert into a decimal number.
from percentage. So you know how to convert a percentage to a decimal number. The number divided by 100. Okay, so rate divided by 100, then I need to convert it to a monthly, then divide by 12. So obviously it will become rate divided by 100 into 12. So in this way I will get the monthly rate, and then हमें number of payments भी calculate करना है. Okay, so here you can see the term which is given in years. Okay, so if we need to get it in monthly term, like हमें ये पता करना है कि कितने month हमें repayment करना है. सो लाइक एक साल में 12 मंथ होते हैं. सो यदि हमारे पास 25 साल हैं या 50 साल हैं तो टोटल मंथ यदि कैलकुलेट करना है, लाइक द नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, वो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक टर्म मल्टीप्लाई बाय 12. सो इन दिस वे आई विल गेट द नंबर ऑफ रीपेमेंट्स. ओके, देन यहाँ पर हमने दो वेरिएबल क्रिएट किया है, लाइक मंथली रीपेमेंट एंड टोटल रीपेमेंट, टू स्टोर द monthly repayments and total repayments value. Okay, after the calculation. और यहाँ पर हमने दो if else कंडीशन का यूज किया है, लाइक यदि टाइप रीपेमेंट, उस समय पर हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे मंथली रीपेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए. यदि टाइप इंटरेस्ट ओनली है, देन आई विल यूज द लाइक अनदर फार्मूला टू कैलकुलेट द मंथली repayment. Okay, so let's see first for repayments. If user has selected the interest type, or sorry, mortgage type as repayment, then in this case how I will we will calculate the monthly repayments. Okay, so first what we need to do, we need to like multiply between amount and monthly rate. Okay, and then we need to divide it by 1 minus math.pov. So like math.pov is just the power. Okay, so like what it will pick here, like 1 plus monthly rate. तो whatever the our monthly rate, उसमें हम +1 करेंगे, and then उस पर हम पावर को ऐड करेंगे, and power will be number of repayments. Okay, like which is term divided multiplied by 12. Okay, so like in this way, like if you see how it will behave, it will like in the math it will look like this, like 1 plus like monthly, you can see monthly rate. So monthly rate you can say rate. Okay, and then divide by 12, divide by 100, or divide by 100, divide by 12, so whatever the case, and then to the power of, okay, number of repayments. So number of repayments are like term. Okay, term multiplied by 12. Like I am just showing you that part. Okay, I hope you understood it. Okay, and then whatever the result I will get, I will subtract it from 1. Okay, so in this way we will calculate the monthly repayments. Okay, and to get to know the total repayments, for that what we will do, we will do monthly repayments plus, sorry, not plus, multiply by number of repayments. Okay, in this way we will get a total repayment. Okay, so what if user has selected type as interest only, then in this in the scenario the monthly repayment will be amount into monthly rate. Okay, there we don't need to use the terms. Okay, we just need to multiply the amount in amount with monthly rate. Okay, and then to calculate the total number of repayments, how do we do? Okay, so सबसे पहले हम monthly repayment into number of repayments करेंगे, and then इसमें हम जो हमारा amount है उसे ऐड करेंगे. Okay, so in this way we will calculate the monthly repayments and total repayments for different, like for repayments case and for interest case, just like this. And then I am just storing that monthly repayment and total repayment to the set result state. Like as you can see here, I have created one set result state. Okay, so जैसे ये यूजर इस mortgage calculator को फिल करता है, and then वो calculate repayments पर click करता है. Okay, so in this case, okay,
like I am storing. Okay, first of all, let's calculate. Console this result. If you can see it, I am consoling the result is console.log result. Should not be colon here, should be comma. Okay. So now let's clear this terminal here. Now once user has filled all the form, okay, and then click on the he also click on the calculator prompt. I click on multiple times. That's why it's showing multiple times here. So now you can see here in the result state the actual result has been stored here. Like you can see for this amount 2.5 lakhs dollar and the mortgage term 25 and the interest rate is 5.5. Okay, for this value the monthly repayment will be one sorry $1,535.22 and the total repayment will be 4,60,565.62. Okay, that will be total repayments. Okay, so आज के इस लाइव स्ट्रीम वीडियो में हम इस अमाउंट को जो अमाउंट हम यहाँ कंसोल में अभी के लिए शो कर रहे हैं उस डाटा को हम लाइक मॉडल रिजल्ट कैलकुलेटर में शो करते हैं. ओके, एंड हाउ डू वी शो इट, उसका यूआई किस तरह दिखना चाहिए. Okay, so to take reference for that, like if you go here, the like starter code which I have downloaded from the Frontend Mentor. Okay, here in the design folder you can see the like all the UI, like how we can design our UI. So first, if we don't have the result, for that case we need to create our UI like this. And once I got the result, okay, so in this case I need to show our result like this. I hope till here everything is clear. But if you have anything, any query, you can comment. Okay, I will try to reply it. Okay, so but so but before starting like creating this UI, I just want you guys to like just I don't want you to have any kind of doubt from till here. Okay, so if you have any doubt, comment, and also make sure to like this live stream. Okay, so like it will reach to other people as well. Okay, and they will also get some benefits if they are needed. Okay, and also make sure to subscribe also. Currently I am at 443 subscribers. Okay, and my target is to reach 500 subscribers. Okay. So just hit the subscribe button if you're new to my channel also. Okay. And if you like my content, so now let's start creating the result component. Okay, so सबसे पहले हम like empty state को create करते हैं, like result shown here. इस फाइल को इस UI को create करने का प्रयास करते हैं. So for that I will go to our PS Code. Okay, and then I will close all the field because we don't need it. Okay. I think we needed the app, so I will open the app component. Yeah, hi in the last. First of all, welcome to our my stream. Okay. So just you can comment your doubt. Okay, I will try to okay solve it. Okay. Um, let's see. सबसे पहले like you can see here we have the result. Okay, so we need to pass this result props. Okay, our result state to this like here you can see mortgage result component. Yeah, I have created an
sellable project in AI, ML, okay, and Python. But I am currently doing full stack for my career for high pay. Should I shift my career to project? First of all, let's see get your problem. Like आपने already एक sellable project को create किया हुआ है with the help of the AI, ML and Python से. Okay, and currently doing full stack for my career high pay. Should I shift my career to projects? I think if you are already in doing the your full stack, first of all, I just want to know like आप अपना career को कैसे करें? Either क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, या आप फ्रीलांसिंग अपने प्रोजेक्ट को सेल करते हैं? Okay, so just you can send your like कैसे आप मतलब like अपने करियर को मतलब करियर में अपना वर्क को कर रहे हैं, आइदर यू आर फ्रीलांसर और working professional. Like I just give it like if you are freelancer then and if you are doing good there, okay, so you are a student. Okay, so now first you should have make some experience in doing the full stack. Okay, last year we did. Okay, so now you can build your project. Okay, like there are multiple opportunity in like Python as well. Okay, like AI, ML, and you can see the growth in AI. Like every almost every company is in focusing in AI, ML. Like I can give you one scenario. Like in my last company, like where I was working, yeah, they are also like more focused on like there are more person are working professional was with the field of AI, ML. Okay, and they are limited person who develop the software because like if you can see now like multiple you can relate if you are in MI, AI, ML, like the security जितने भी security ऑपरेशन होते हैं, okay, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, या कोई भी प्रोजेक्ट इफ यू कैन सी ना, आजकल तो सभी प्रोजेक्ट में एआई का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया. So if you have knowledge in AI, that will good. Okay, you should just make your project stronger, like it will make the strong impression on the company also. Okay. So I think just focus whatever thing you know, just focus on it and make the strong. Okay. I hope I can clear your doubt. No, like ऐसा कोई बात नहीं कि पाइथन में ज़्यादा पैसा है. You can like for creating a software like as a full stack, like इसमें भी आपको like फिर से शुरू से पूरा सीखना होगा. ओके, फ्रॉम बेसिक टू आपको एडवांस होगा, और अधिकतर कंपनियां क्या होती हैं वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर करती हैं. ओके, सो इफ यू हैव like good knowledge in Python also, like you can also make money, I'm sure. Okay, AI तो है फुल स्टैक मैं बता सकता हूँ सर. Yeah, but you can practice on full stack. You can check it out. Okay, I'm not saying, but I would only suggest you to focus on like you have the knowledge in by ML, sorry AI ML. Okay, so first, okay, focus on stick with that. Okay, and then later if you find like it's not, then you can switch it. But at least we will have some like you can say that you'll have some work in it. Okay? तो मेरे पे जो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट्स है वो उसमें कैरियर बनाओ सर, या जो फुल स्टैक लाइक, यदि आप डिफरेंट डिफरेंट किसी लाइक मैं भी आपको एक सिनेरियो बता सकता हूँ. लाइक मार्केट में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक आते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं. ओके, लाइक पता इसका वो मतलब नहीं आप देखते हैं अभी भी बहुत सारे जो ऐसे कंपनियां हैं
जो अभी भी लाइक यू कैन से आजकल तो मार्केट में इसमें रिएक्ट नेक्स्ट जेएस ये सब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन कुछ कंपनियां अभी भी हैं जो अभी पीएचपी इन सब पर अभी स्टिक हो रही हैं, इन सबको मतलब से अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रही हैं। सो इट्स नॉट केस, ओके, बट लाइक एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लाइक लास्ट इंटरव्यू में से मैं एक कंपनी में मुझसे इंटरव्यू किया था, मतलब ये क्वेश्चन हुआ था कि लाइक आप क्या प्रेफर करते हैं, लाइक मार्केट में तो एज ए नो मार्केट में नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, ओके। सो आप क्या उसमें प्रेफर क्या करते हैं कि अरे आपके पास जो नॉलेज है आप उसमें ही अपने आप को मास्टर करना चाहते हैं, या आप नए नए टेक्नोलॉजी में को सीखना चाहते हैं, आप आपको उसमें क्या करना चाहिए। ताकि ये डाउट सबके दिमाग में आते हैं कि लाइक इस फील्ड में ज़्यादा मनी है, मैं ये करना चाहिए, ओके। बट आई वुड सजेस्ट सजेस्ट कि आप पहले आप जिस फील्ड में हैं, उसमें मास्टर बनिए, अपने आप को मास्टर करिए, क्योंकि यदि आप उसमें मास्टर करेंगे सो you definitely you will get a stable job there, and then later you can focus on the different thing also. यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आपका जहाँ पर इंटरेस्ट है ओके वहाँ पर आप फोकस करिए। यदि ए आई एम एल में आपको मन नहीं लग रहा है और आप यदि फुल स्टैक में ही यदि आप अपने आप को करना चाहते हैं देन यू कैन फोकस, ओके। यू कैन ट्राई द फुल स्टैक प्रोजेक्ट आल्सो, सम फुल स्टैक प्रोजेक्ट आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई, बट आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको भी आप उस पर भी आप पॉलिश करते रहिए, उसको ये नहीं कि से छोड़ दें, उस पर भी आप काम करते रहें, जिससे कि आप उसे यदि भविष्य में आपको लगे कि नहीं इस समय पर हम इसको इस स्किल को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप उसे उस समय यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका रेज्यूमे भी बहुत स्ट्रांग होगा। यस, हाँ जी सर, पर मास्टर आप दोनों में कर सकते हैं, हाँ वो तो है, लेकिन पहले आप किसी एक में ही मास्टर करेंगे ना, दोनों को एक साथ तो मास्टर कर नहीं सकते हैं, या एक दोनों पर एक साथ फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट टैग स्टैक हैं, ओके। So just relax your mind. Okay, don't be confused. You just think कि आपको किसमें आपको अच्छी लगती है, मतलब आपको आइदर फुल स्टैक अच्छा लगता है या ए आई एम एल का प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर स्टिक कर सकते हैं और उसमें फोकस करिए, ओके, जस्ट डू हार्ड वर्क देयर, ओके। नाउ लेट्स कम टू आवर प्रोजेक्ट, ओके। सो सबसे पहले एंड बिफोर दैट आई जस्ट आल्सो वांट टू नो लाइक इंटरेस्ट, आपको क्या रिएक्ट आती है, आप क्या आप रिएक्ट में बिगिनर है या ऑलरेडी आपको रिएक्ट आता है, ओके। प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं सर, सेम आपका भी मेरा जैसा ही सिनेरियो है, लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने कोडिंग सबसे पहले देखा था, लाइक मैं सबसे पहले HTML से इंट्रोड्यूस हुआ था कोडिंग में, ओके। मुझे पाइथन इन सब के बारे में नहीं पता था, कि सबसे पहले मुझे HTML से इंट्रोड्यूस हुआ था, लाइक हमारे यहाँ कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं, तो जहाँ पर मुझे HTML के बारे में सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे भी वहाँ HTML के प्रोजेक्ट्स जैसे सर बताया तो वो देखकर मुझे बहुत मतलब देख, क्योंकि जो होता है ना आप किसी एक टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट से सर्कल बना देते हैं या स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं या इमेजेस लगा सकते हैं, वो सब कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा था, इससे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट इसमें हुआ था फुल स्टैक में, ओके। सो एंड देन मैंने इस पर और रिसर्च किया और इस पर मैंने कैसे इसको कंप्लीट करना है ये सब रिसर्च करके अभी के लिए मैंने अपना स्किल्स को थोड़ा लाइक एक्सपीरियंस मैंने इसमें बिल्ड किया है, ओके दैट्स गुड। No worry, you can also enjoy this tutorial video also, but if any point if you feel like bore or and if you have any other doubt also you can also comment me, thank you so much like कि मैं आपका डाउट को सॉल्व कर पाया, ओके।
Now let's focus on this project as well. तो सबसे पहले व्हाट आई नीड टू डू, ओके, हमें यह इस रिजल्ट स्टेट को लाइक अपने मॉर्गेज रिजल्ट कंपोनेंट को पास करना है. सो वी कैन पास एज अ प्रॉप देयर. So here I will write result is equal to, and inside the value also I will pass as a result here. Okay. So now this component will have access to this result state also. Now let's see if I open this component. Okay. तो यहाँ पर कैसे हम इसको like access कर पाएंगे. So there are two ways. Okay. Basically like सबसे पहले we can use here the props like this. Like in this props we will have access to all the props which we have passed to this mortgage result component. Okay, now let's see कि हमें इस props के अंदर क्या मिलता है. If I do console.log, okay, props, okay, I will show you the both way like how we can have access to the props to any React component. Now here you can see I just console the props here. Okay, props just a certain properties for a certain properties. Okay, so now here and as a console here, and now I will go to my web browser, okay, where my project is running. Okay, and here I will open the console. Okay, what is the, okay, pro is not defined. Okay, let's refresh it. I hope I don't have any error. This is the coming from my extension. Okay, so you can ignore this part, just focus here. Like you can see here I am getting the prop. Okay, and if you open this props you can see inside that props I have result object. Okay, so now like in this way we can have access to the result also. Now let's see if I first let's clear this terminal. Okay, यहाँ पर हम amount को fill करते हैं. Like let's say this time 1.25 lakhs. Okay, term let's say for 10 year. Okay, our interest rate is 5%. Okay, mortgage type repayment, and you can say for every लाइक बटन जब जितनी बार भी मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ उतनी बार मेरा ये कंट्रोल हो रहा है. सिंस लाइक जितनी बार भी मैं इस अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ. ओके, कैन सी इन एप्स लाइक मॉर्गेज फॉर्म में मैं अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ और जितनी बार अमाउंट मेरा चेंज हो रही है उतनी बार यहाँ पर स्टेट ये रन हो रहा है. तो जितनी बार भी मेरा ये सॉरी रिजल्ट अपडेट होगा उतनी बार यहाँ पर मेरा वो रिजल्ट भी सॉरी कंसोल होगा. Okay, so now finally if I open this, now the result is empty currently. Okay, so now if I click on calculate repayments button, now let's see this time what I will get inside of prop. Props open करता हूँ. So now if you can see in the result I'm getting multiple repayments and total repayments. Okay, so I think you already get the logic like how do we show like the for empty. Like if यूजर डज नॉट हैव एनी रिजल्ट देन उस केस में हमें दूसरा यूएक्स ओपन है, और इफ वी हैव द रिजल्ट देन हमें दूसरा यूएक्स. तो हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके अपने यूआई को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, so let's close it for it now. Go to the mortgage result. ओके, सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को डिजाइन कर लेते हैं. यू कैन सी ओके हियर. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डिजाइन आवर बैकग्राउंड. सो यहाँ पर हम टेलविन सीएसएस का हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है. सो लेट्स सी फर्स्ट का आई विल शो यू वन थिंग हियर लाइक इन द इंडेक्स सीएसएस. ओके, यहाँ पर हम मैंने ऑलरेडी कुछ कलर वेरिएबल को ऑलरेडी क्रिएट कर लिया किया हुआ है. ओके, जिसको कि हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं. ओके, so you can say here we need to show some different background color. I think this is the color slate 900. इस कलर को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. So here I will use bg, okay, color slate and 900. Let's see what I will get here. Now if you can see
background color has been changed. Okay, like background color तो हमने अच्छे पढ़ा, बट यहाँ आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है. Okay, like from right side you can see the rounded color, और if you see bottom left में, okay, जो कलर है वो ज़्यादा कुछ सर्कल टाइप में. Okay, हमें लाइक यूआई को भी अचीव करना है. First we will try to make the right side of this box to have the rounded color, sorry, rounded border. For that I will use rounded, okay, hyphen r, is right side, and then md. Okay, let's see, you can see here some little bit curve there. Let's see कि मैंने यहाँ पर कितना rounded का यूज किया है. So for that I will go to mortgage form. Okay, let's see कि वहाँ पर कितना border radius का यूज हुआ है. I think it's not used. I think it's in the app. Let's say in the app section. Here is also not a border rounded. Can you see here any rounded? Let's say in for display place. Here is also not. Then how this rounded border is coming? It must be somewhere in the app. Like properties BD color slash 100 double screen W H screen. Okay, basic color white. Okay, here you can see here I have given the rounded Excel. Okay, so what I will do, I will copy this and I will go to my result, and here instead of MD I will use Excel there. Okay, now you can see I think it's the same rounded color. Okay, just make it also this rounded. Okay, so for that I will use rounded. Okay, now let's see. For that I think I need to do some research on Tailwind CSS. So first of all I will open the official site of Tailwind CSS. Go to the Tailwind CSS.com. Okay, यहाँ पर हम सर्च करते हैं rounded corners. Now here you can see the all the properties which is available. Okay, about rounded none, rounded SN. Okay, so let's see how we make the bottom left side. Okay, इस पर हमें कुछ rounded है. So for bottom, like for S, start. Okay, so and start. No, it will apply the class name as start and start. Okay, we don't want it. हमें सिर्फ एक ही corner को सिर्फ round करना है. Okay, so just scroll down. Let's see how we can do it. There should be some property. Okay, just scroll down. Yes, you can see. For start. Okay, we don't want it. Okay, start means like this part. You can see start and start. Okay, we want start and end. I think let's see. Start radius. Start and end. Okay, let's see. If I use this rounded SE and Excel. Let's copy it. Here if I press it, start AC and slash Excel. Let's see what I will do here. Where is applied? It's applied here. Let's give it some more. Let's say 12 pixel. So I will get to know ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है. अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. Should be get applied. Rounded SE 12 pixel I have given there. Let's give it 20 pixel. Okay, I think it's applying. Here you can see start and end. Okay, I got it.
So end, for this I think it's different. Let's modify it. Let's say end start. Yes, you can see if I gave border, rounded border to end and start, then you can see it's giving some curly border, sorry, not curly, rounded corner. I think हमें corner को और increase करना होगा. You can see there's more rounded corner there, so let's increase it to, I think, let's say 36. Oh, it will look okay. We need to give a little bit more, so let's deal with rem, true rem. Let's say give us 4 rem. Okay, I think now it's looking nice. Let's make it more. 8 rem. ये कुछ ज़्यादा ही हो गया. 6 rem, I think it will look fine. What do you say, guys? Yeah, I think it's looking fine, in my opinion. What do you say? It's looking close to the design. I think our 4 rem it will look fine, as close to this. And just compare it. This is the design which I want to implement. Okay, और यह वो डिजाइन है जो मैंने अचीव किया जस्ट अभी. I think it's looking nice. So that's it. Now अभी के लिए, so like जब मेरा मैं रिफ्रेश करता हूँ स्पेस को, तो उस समय मेरा मॉर्गेज रिजल्ट जो है वो एम्प्टी होगा. ओके, सो जब मेरे पास कोई मॉर्गेज रिजल्ट नहीं है, तो हमें एक ग्राफिटी यहाँ शो करना है या इलस्ट्रेशन यहाँ शो करना है, एंड देन नीचे रिजल्ट शो नियर एक हेडिंग शो करना है, एंड देन उस पैराग्राफ को शो करना है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अचीव इट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, एंड व्हाट विल बी द कंडीशन देयर. सो सबसे पहले हम किसी कंडीशन को यूज करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का पहले यूज करना होगा. एक चाहे प्लाजो के लिए आप जेएसएस और सॉरी एचटीएमएल के अंदर यदि आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होता है. सो आई विल ओपन वन कर्ली ब्रैकेट्स. ओके, ओके, so I think I forgot to introduce the second way, like how we can access the props. Okay, so if you see the props, you can see the I think I will go to console. Let's do the console.log props. Okay, so if you see here props, I'm getting the props as an object. Okay, so I hope you already know like how we can destructure any property from an object. Okay, so for that what we need to do, I will create one object here and just write a property name. Like the property name will be result. And in this way, we will have direct access to our result props. Okay, so if I console it, okay, and refresh it, you can say I am getting the empty object. Okay. Okay. So it's done. So first of all, what I will do here, I will create one div, or let's say for the completed state also. Yeah, I think I need to create a different div. No worry, let's create it. Okay, so from here I won't write a div. First here I will write if object, okay, dot keys. Okay, so what it will give me, like if you have if I have any objects, okay, I will directly show you from an example, so you will understand better. So here I will create new file and open up Kuka file. Okay, let's first minimize. Okay, here first I will create one object. The first object equal to, let's say it has property as a, which have the value as 1, property b, which has the value as 2. Okay, now here if I do console.log, okay, then I will use object. Okay, and here if I do object dot
keys object, and now you can see a constructor object is there. And if I use the keys method there on it, and if I pass the our object created object as a parameter there, okay, so now you can see I am getting an array as a response, okay, और array में हमें like जो हमारा object का key है वो as a like array का element store हो रहा है. So like what does the object or keys method return? Like it will return the key of the object as form of a array. Okay, so how do we know like if I have the result? Like if you see here, if I don't have any result, I think there's some error. So if I have any I don't have any result, so in this case I will get an empty object. Okay, यदि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है तो इस केस हमें empty object मिलेगा. और we can use one scenario. Okay, so now we can use this part also. Like if I have the result, yes, I can use this logic. So if I have an empty object, then in this case that means that we don't have any result. But if I have any keys inside it, that means we have calculated a result. Okay, then how we can know? Like with object dot keys, like it will give me a keys as part of array. So we just need to see like if the length of that array is greater than 0. Okay, like if it has some length, that means we have the result. If the length is 0, that means we don't have any result. We can show that empty illustration message there. Okay, I hope you understood it. So let's close it. Okay, so here I will do object dot case. Okay, object dot keys dot result. Okay, that's it. And here I will use the length property. Like this will give me an array, and I am just checking the length of that array. Okay, if it has any length, okay, then show the result. If the length of this object is 0, then in this case show the different div or different UI. Okay, so first I will create a like empty div for the true case. Okay, I will implement it later. Let's see for the if we don't have any result. So first I will create a div here. Okay, let's save it like this. Okay, so first of all I will give some class name to this div. Okay, so let's give as class name as flex justify center and items center. Okay, and also I will give as full. Okay, now inside this div, okay, so now first I need to show image. First I will create a image tag. Okay, okay, so I need to show this image. Okay, so where can I find this image? So if I go to the my src under the asset and under this image folder, you can see I have one illustration empty.svg image. Okay, so I can use it. First of all I need to import it. So here I will import it. Import empty icon, okay, from dot slash then assets slash images slash illustration empty dot svg. I will copy this icon and I will pass as a source to this image. So src equal to empty icon, and I will give the alt property as empty icon. Let's save it. Now if I go here, you can see I'm getting this. Okay, let's close this inspect menu. Now you can see I am getting the icon here. Okay,
Now I need to show the text, some text below this icon. Okay, so here first I will create one. I think it's a h2 tag. H2 tag. Okay, here I will write text as results. So on here, so results shown here. Okay, let's apply some class name to it. So text hyphen bold. Okay, I think not text, it's font bold. Okay, yeah, showing that font bold, but it's not showing. It's showing like you can see text is showing right to the image, but I want it to show below. Okay, so how can I achieve this? I can just give class name as block or inline block. Okay, now if I use this, I think it should go below. No worry. Okay, I got this. Here I have used the justify flex. Okay, so here I just need to show make the change the flag like flex direction. Like by default, the direction is a row, but I want to show like top bottom way, like in the column way. So I will change the direction as column flex call. So if I do this, you can see okay the text is coming down to that image. Also, I need to change the like color of the text. So here I will use text color white. Okay, yes. I think I need to increase the font size. So I will use text. I think Excel. Let's try the go with Excel first. Okay, I think yes. Look nice. Now let's show this paragraphs also. So below this is two. I will create one p tag. Okay, so let's see what we need to write. Complete the form and click complete the form and click calculate repayments to see calculate repayments. Okay. To see what your monthly repayments, to see what your monthly repayments would be. Okay, just apply some class name to it also. Like first class property will be text color white. Okay, I think we don't want it to. Okay, it's too big. Let's give it a text sn. Okay, and then I think it's center. Yes. So text align it to center. Yes, align it to center, and also let's make it small, and also okay. Yes, just give it some padding from left to right. So I will use px as 4. Okay, I think it's looking similar to the given design. Or you can give as w hyphen let's say 2 by 3 and m auto. Let's see how it's looking to here. We can handle with the padding. Okay, here m auto I think it's not working. So let's give us px as 6. Yeah, I think it's looking nice. Just give it some margin from top to empty as 2. Okay, so I think it's looking fine. What do you say, guys? Okay, let's see.
on the mobile view. Okay, I think I need to give some for mobile device. Let's give it some padding from top bottom. Okay, so here I will give py. Okay, not y only, py. Let's give it as 4 so that it will should have some gap from top and bottom. Let's increase it more, like py 6. Okay, just give me a second, guys. I'll just put my device on charge. Okay, charge. Okay, charge. Okay, so what is this error? Error message here. Convert undefined to null object. Let's press it to see whether I'm getting the same error. There's no error. Okay, so now empty response के केस में तो हमने UI create कर लिया है, but let's create the design for when actually we have the results, right, in the completed state. Okay, so first there is some one heading like your result and the one p tag. Okay, so inside this div, okay, first I will create one s2 tag, and here I will write your results, and let's give some class name. So class name, you can see there is some gap from top bottom and left right, so I will also give the same as 6 p6. Okay, so if I have first what I will do here, okay, like let's consider okay the scenario. I just making this condition to positive. Okay, so like at least I can see this design, okay, which I am creating now. Okay, currently now like the result is empty. Okay, so in this case it will always show me the this design which I already have created, but now I want to create my result. Okay, so for that case only I just uh, like use the negation operator there. Okay, so that means if like the like and now the condition is become opposite. Okay, if the length is 0, like if we don't have any result, then in this case we will show the result. Okay, but don't make sure like this is the case. Okay, for the sake of creating this design only I'm just using. Okay, so now you can see I'm getting the result. Okay, so it's some bold text है, bold text or text color with changes. Okay, so let's keep some class name. Okay, so class name I think I can copy the same class name. Okay, so I will copy it from here and paste it here. Okay, now your result is created. Let's create the font. Okay, so below this I have one paragraph. Okay, so now what is saying? Your result are shown below. Okay, just write it. Your result are shown below based on the information you provided. Based on the information you provided. The information or information to adjust the result. Edit the form. Adjust the result
to adjust the result, edit the form and click edit the form and click repayment or sorry calculate repayment, sorry calculate repayments again. Yes. Now apply some class name is text access, okay, or text color white, text center, no it's not center, can I ignore it? Now you can see, okay, or I guess it's not a white, proper white. So text color let let's give it as 300. I think I have the 300 variable. Yes, let's say I think it's a 300 only. Here also I should change it to, instead of white it should have slash 300. Okay, now let's give it some gap from the result. Sorry, H2. So I'll give it M2 5.2. Okay, so now it's done. Now below it is to population filter. Okay, let it be. Okay, now below this paragraph I need to show like the result area. For that I will again create another div. Okay, first the, okay, you can see I need to give the border top and this should have the different color. Okay, so first I will use part class name. Okay, first I will use rounded hyphen md. Okay, and what I name h, I think h I fit. Okay, just give some padding to p hyphen 4. And I need to change the background color also, so I use page color. Let's see what color. Like here I have already used the slate 900, so I need to use a different color combination. Let's say let's try the slate 700. This is slate 700. Okay. But if I go to our page, you can see it's looking like this. Or I guess I just used the opposite to it. I think this background color जो मैंने अभी यहाँ पे यूज किया, ये है, ये वाला बैकग्राउंड को पीछे यूज करना चाहिए, और जो पीछे मैंने यूज किया है वो इस टाइप पर बैकग्राउंड कलर होना चाहिए आई गेस, क्योंकि आप यू कैन सी यहाँ पर कुछ लाइट बैकग्राउंड कलर है और इसका बैकग्राउंड कलर डार्क है। तो लेट्स जस्ट चेंज इट। यहाँ पर मैं 700 यूज करता हूँ, यहाँ पर 900। लेट्स से हाउ डू यू, आई डोंट थिंक सो इट्स लुकिंग फाइन। ओके लेट्स सी, और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है मेरे पास, 500। let's type to 500 और लाइट 300 और भी लाइट होगा आई गेस। यस 500। लेट्स सी, यहाँ पे यूज करते हैं 900, यहाँ पर 700 इधर, या 900 और 700। अपोजिट करते हैं 900 700। That's it's looking nice, my I think it's looking nice। ओके, और टॉप बॉटम से कुछ डिस्टेंस भी है, so let's
maintain the distance or gap also. I will use empty hyphen 4. So let's give it for this is okay same way. ओके सो इसका यहाँ पर अब बॉर्डर टॉप कलर भी हमें चेंज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर ओके फॉर टॉप आई थिंक इट विल यूज टी ओके border T and I will use border color line. Okay, you can see I have some line color on the top with command paste command. So for that I will give us 2 there. Let's make it more bold. 4, I guess 4 is fine. Or let's make it little bit more. 3, let's see for 3. How about I think 3 is not there on the properties. Okay, border width 2 है 4 है. So let's I need to go with 2 only. I don't have any option. Okay, so now it's done. Okay, so now inside it I have one paragraph P and then below it I have the actual result which I need to show. Okay, so let's create it. First I need to show the your monthly repayments paragraph. There are right your monthly repayments, monthly repayments. Okay, and here I will show the actual value. So here I will write a result. Okay, so now if I go to React.js, I think the value is monthly repayment. So result colon, so question mark. I am using the optional chaining here so that it won't fail. Okay, and before it I will use the dollar symbol. Okay, now you can see it's looking like this. Okay, what I will do, I will make the text is small so that it looks in a small size. So I will use class name as text access. Okay, you can see it's become small. Color I need to change it. Okay, let's give it a different color. So text color white. How let's see how it looks like. Yeah, your monthly repayments. State of access. Let's give it as SM. Okay, small, extra small. Access means extra small, and access sorry SM means small. Okay, now I need to show the like the result below. Again, how would I will show there? Let's say first I will give the class name. Okay, for age of now, I'm using the same number like 1797.75, 1797.74 there. Okay, that's only for designing. Okay, then I will replace it the actual value. Okay, so now you can see I need to give the line color and I need to make it large. Okay, so here I will apply text as text SL, text color line and font bold. Let's see how it will. I need to increase it more, so I will use 2XL. So I think 4XL will look same. Yeah, I think it's looking fine, I guess. Okay, 6XL I think ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. Okay, now I think 6XL भी सही है. Okay, margin दे देते हैं. From top it's 2. Yeah, or little bit more. I should give it more. I think the 2 margin top 2 is fine.
ओके, और हमें क्या यहाँ पर शो करना होगा? ट्रैकिंग, आई थिंक जो gap है between letter, I need to increase it. So for that I will get tracking widest. Okay, now let's see. Yes, ज़्यादा widest, I think ज़्यादा दूर हो जा रहा है, तो wider. Let's see from wider. Yeah, it's done. So your monthly repayments design हो चुका है, and below it I need to show one horizontal line. Okay, so here I will give HR. It will give one horizontal line like this. I need to change the color of HR. Okay, and how do I change the color of HR? Okay, for that we can search it. I change the HR color. Okay, changing the color of an HR, like I think color property will won't work there. Okay, so for that I think I need to change the background color. Okay, or the border color, I need to give the border color. Okay, like this. Let's try to give it. So here HR, I will give some class name. So class name will be like border color and white. Okay, the color name should be white. You can see I'm getting the white color border. Okay, just make it a little bit thin. You can see यहाँ पर जो HR हमारा है उसका जो विथ है वो पतला है, पर लेकिन यहाँ एक्चुअल जो HR है उसका विथ थोड़ा सा मोटा में यहाँ दिख रहा है, थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। इसे हम पतला करते हैं। तो फॉर दैट आई विल यूज बॉर्डर। ओके, सो विथ के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइक 0.5 px लाइक दिस। So if I do, nothing is happening there. How do I apply the same border? You can say border 1 px ज़्यादा मोटा थोड़ा दिख रहा है। If I use 0 px then I think it दिखेगा ही नहीं। Yeah, if I use 0.2 px, okay, for 2 px also it's looking too much thick. Okay, so ऐसे हम और पतला कैसे कर सकते हैं? Not getting thin. Okay, let's search it also. फिर हम सर्च कर सकते हैं गूगल पर। Now you can search change. Okay, should I give the width or height? I think I can play with height and width. Okay, here if I give h hyphen, let's say 0.5 px, let's say how it will. No, let's change the thickness of HR element. Okay, let's. The HR tag in HTML is used to create horizontal row. Okay, यह हमें पता है। और thematic break या inner raster break. The thickness of HR tag defines the height of the horizontal line using CSS height property. Okay, now let's see कि कैसे हम इसे change करते हैं। HR property value. Okay, got it. So where is apply like here, like you can see created a one HR tag position relative from top, ये स्पेस के लिए दिया है, बॉर्डर है, बॉर्डर नन आई 12 px। ओके, तो बॉर्डर नन आई 12 px background color, जैसे ही handle it by using the background color and height. Yes, I can also do it if I do basic color white, and you can see
I'm getting online. Okay, let's increase it to 0.5 to 2px. I think yeah, it's looking fine, I guess. So instead of white, let's give it different colors. Let I think 100. How it look? Let's increase it more. 300. Yeah. And I need to give the gap from the edge, so I will give empty hyphen 6. Yeah, you can see there is gap between the value and the HR tag. Now HR tag के नीचे हमें क्या शो करना है? हमें शो करना the total repay over the term. इसे हमें शो करना है. So for that I will again create one paragraph. Okay, and here I will write total you will pay total you will pay over the term. And below this also I need to show one p tag. Okay, again the same thing, dollar, and then 539322 539322 dot I think 94. Let us apply the class uh, style. That's the class name, text, color, white, font, bold, text, Excel. Yes. I need to get tracking wider. जिससे कि लेटर के बीच में space persist हो. Okay, I just need to keep some margin from this horizontal line, so I will keep the same empty 6 for this paragraph as well. So class name as empty hyphen 6, and also I will use this. I will copy the above class name property and paste it here. Now you can see the total. You will go over the term is below, and also I need to give some margin, so I will use empty hyphen. Okay, increase the gap also for this case. So here I will give as empty 6, and I think it's done, guys. What do you say? And one more thing, P6, I think it's correct. Okay. So now here I will, now I can replace it. So it will be a result question dot monthly repayments. Let's go to the app and copy paste. So copy monthly repayment, paste here, total repayment, copy it, and I can paste it here. So like it will be a result portion of this, and I can remove the portion negation. Now if you can see here, if we don't have the result, you can see result will somewhere. And also I need to do one more thing. If I click on the clear, okay, I will show it later. Okay, let's first see the responsiveness also. Let's clear it and refresh it. I think there is no error there. Now let's first enter any amount. Let's go to the form as well. I think I have. Okay, so let's. I'm not seeing.
mortgage result. Okay, not and go to the app. Okay, here H screen. I will do LG for large screen. It should come there. But I need to achieve this scrollable behavior. Okay. Now here I will write a mortgage amount as 125,000. Okay, mortgage term as let's say 12 year. Her rate is 8%. Okay. Now if I select on the mortgage type as repayment, okay, और यहाँ पर calculate repayments पर यदि हम click करते हैं, then now you can see I am getting my result below. Okay, your result and your total monthly repayments will be 1,353.07, and the total you will pay over the term is 1,94,841.47 dollars. Okay, so now if I click on this clear up, you can see my form is getting cleared. Okay, but the result is not getting cleared. Okay, I'm still seeing my previous result, and also I wanted to clear this also. Okay, and how I will do it? So first of all, I will go to my handle clear function. Since I have defined it here, okay. So for what I will do, I will cut it from here. Okay, like this. First of all, handle clear. I will pass it as a props. Okay, to this form. So यहाँ पर हम लिखेंगे handle clear. I think पर clear form. Function name should be clear form. I will go my app. Okay. Okay, and below this calculate repayments function, I will paste it. Okay, so I will paste it here, clear form. And after setting the mortgage data, what I will do? I will do set result to the empty object. Okay, and I will copy this form and pass as a prop to the component or mortgage form component. इसे सेव करते हैं. Okay, now let's try it again. Amount enter करते हैं. Let's say this time it will be 1 lakh. I think it's 1 lakh for 10 years. This should also be 10. Okay. Mortgage time is repayment. So if I click on calculate repayment, you can see I am getting my monthly repayment is 1,321.21, and the total repay over the term will be how much is I think it's 1,58,580.88. Okay, now the test case which I want to test, if I click on this clear out. Okay, so now if I click on clear up, you can see form getting clear, and at the same time also it result is also uh, changed. Okay, okay, and I am seeing the result will shown here UI. Okay, so that's it. I think I have achieved the all functionality. Okay, and one more thing I will do. Okay, hmm. Here I will do padding from top bottom as 4. Okay, and for large device, I think if I give, nothing will be seen from here. But if I make it seen in the smallest device, you can see there will be some gap from top. Okay, and if I see in on mobile, I think it's like this, but there is too much gap. I think I can also handle it. Uh, from where it's WSB.
the W 2 by 3. Okay. Yes, it's for I think it should be for large screen. So here I will write large, and for big screen I think I just need to give some padding from XY. So PX, so it should be 4. Then I think it will be X. Or itself I can give as P6. Then it will look fine, I guess. Okay, so like there are UI be completed here. Okay, and you can see it on the different distance size. For iPhone, it's looking like this twice. Okay, if I go to Samsung Galaxy asset, you can see it's looking like this. Okay, and if I go to the iPad version, okay, you can see it will look like this. And also Samsung Galaxy, I think my UI is getting created. No, sorry, my UI has been created. And also I handle all the test cases as well. Okay, okay, let's test this online test the last time. Okay, so now this time I will enter the amount as 50,000. Okay, for 3 years. Interest rate is 8%. And this time I will select interest only. And if I click on calculate repayment, your monthly repayment is $333.33, and the total repayments I will do over the term is 62,000. Okay, and if I click on this clear up, it will clear up. So that's it, guys, for this video. Okay, and I have completed the like challenge also. And if you have any query or suggestion, okay, for my live stream, you can comment. Okay, I will try to improve it. Okay, if anywhere I am lacking it. And if you like my today live stream video, just hit the like button. Okay, comment your favorite part in the comment section, and also make sure to subscribe my channel. Okay, I need to reach 500 subscribers. Okay, so just try to achieve that. Like you can say the what is that milestone. So it will help me to grow in my career as well. And also please like this stream. Okay, I will put the like target as 50. I think I am sure guys, 100% sure you can achieve it. So just hit the like button, and also you can comment on your like on which project I should create a video or I should work in the next live stream. You can comment your thought or opinion also. Okay, so that's it, guys, for this live stream. Thank you so much for watching. Okay, and I'm very happy. Good night to all of you. Okay, sweet dream. Bye bye, guys.